इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को परेशान कर रहा है, एंड दैट इज़ कि अगर आपने इस साल निफ्ट क्रैक नहीं किया और अगर आप दोबारा निफ्ट के लिए बैठने वाले हो तो आपको क्या करना चाहिए। आई नो बहुत सारे बच्चे हैं who are really disappointed with the results. I have seen like over hundreds of comments come on my DMs, on my Instagram, on my even mail for that matter of fact. And I know that a lot of you guys are not very happy with how the scoring was or how unfair it is कि आप select नहीं हुए और बाकी deserving candidates जो नहीं थे वो select हो गए. First things first, यार ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई deserving है या नहीं है, and you and I are nobody to decide that. It took me a while to realize it. 17-18 साल की एज में मेरा भी ऐसे ही दिमाग चलता था कि अरे वो तो deserve ही नहीं करता, how did she make it in and how did I not make it in. But that's not how life works. It's not on your terms, but it's actually a lot of other people that are involved in decisions that kind of define the path of your life, and that's okay. That is life. It is unfair. सब हमारे अकॉर्डिंग हो रहा होता तो फिर मज़ा ही क्या आता, राइट? तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, प्लीज़ खुद के लिए बुरा फील करना बंद करो. प्लीज़ ये सोचना बंद करो कि अरे कोई और अनडिजर्विंग इंसान सेलेक्ट हो गया और मैं नहीं हुआ या मैं नहीं हुई. एंड द सेकेंड थिंग इज़, अगर आप निफ्ट के लिए दोबारा बैठ रहे हैं, विच मीन्स दैट यू गाइज आर रियली डेस्परेट एंड वेरी डिटर्मिन्ड टू गेट इन टू निफ्ट एंड इट इज़ द कॉलेज ऑफ योर ड्रीम्स. सो आई हैव अ फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स जो शायद आपको हेल्प करेगा और शायद आप बेटर प्रिपेयर कर पाओगे अगले साल के लिए, ताकि जो गलतियाँ हमने इस साल की हैं वो रिपीट ना हो. So without wasting any time, let's quickly now dive into this video. The first and foremost thing is you need to set a timetable. It is very important, very crucial that you structure your days and you have a set routine and pattern on which you are working so that you make the most of your days, you utilize your days to the best of capacity. अगर आपका कोई routine नहीं है, कोई timetable नहीं है, तो it is not a very healthy thing and in the long run हो सकता है कि एक साल बाद जब आप निफ्ट के लिए बैठे तो फिर वही results हो और आप फिर हताश हो, फिर disappointed हो. अगर आप चाहते हो कि this time you get in, you have to set a routine, you have to set a timetable. You can't be all lazing around in the house saying अरे मैं तो एक साल ड्रॉप ले रहा हूँ. That doesn't apply. That applies only if you really don't want to do anything with your life. If you really do want to work, you have to start working hard from now on, and working hard in the right pattern, in the right direction, in a timetable, in a routine. Very important. Enroll for drawing and painting classes. This is my tip number 2 for you guys because it is very important when you are in NIFT. तुम्हें already the first year, your foundation year of college is going to involve a lot of visualization and representation, a lot of live drawing, sketching, painting, poster paint, watercolors. These are a lot of things that you will have to use on a daily basis. So consider this investment of going to a painting class or a drawing class to be like you could call it maybe a play school or a preschool before the actual school begins. So ये एक practice session मान के चलो, but it will help you a lot in the long run when you actually get into NIFT and start studying there, because तुम्हें already एक साल का experience हो गया होगा, तुम्हारे hand strokes अच्छे हो जाएंगे, तुम्हारे brush strokes अच्छे हो जाएंगे, तुम्हारा you'll be faster and quicker because you've been practicing it for a year. So that would be tip number 2. Also, painting is therapeutic. It is very relaxing, very how do I say, it's like a stress buster. So it's never like a bad investment if you ask me. Art is always the answer for every problem. Tip number 3 would be, so this is subjective to how much your pocket size is and how much you can invest. But अगर आप एक साल अपनी ज़िंदगी का invest कर रहे हो to prepare for NIFT better, तो I would personally suggest, this is my personal recommendation, if you cannot financially afford it, that's definitely on you. Please don't go to your parents and kind of hover them with this request कि नहीं मुझे तो करना ही है और मुझे coaching class के लिए enroll करो. अगर आप afford कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि you can invest that kind of money, it is only fair that you do it, because अगर तुम अपनी ज़िंदगी का एक साल invest कर रहे हो to study for NIFT again, आप एक साल थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में इन्वेस्ट करो, क्योंकि अगर आपने घर से बैठ के पढ़ाई करी और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आपको पता है आप कहाँ लैक कर रहे हो. और अगर आप ऑलरेडी कोचिंग में थे, उसके बावजूद रिजल्ट्स नहीं मिले, तो मे बी हमें खुद पे मेहनत करने की ज़रूरत है, या मे बी हमें दूसरी कोचिंग ढूंढने की ज़रूरत है. दोनों ही चीज़ें होती हैं, ताली एक हाथ से नहीं बचती. Could be the fault of either or parties or both parties. So please work on that, figure out what is lacking, and invest in a good coaching class.
See, if you're not enrolling for a coaching class and you want to take part in like one of those diploma courses that NIFT has and any other fashion colleges have, I don't think it's a bad idea. I think it's a brilliant idea because एक आप routine में रहते हो, B आप कुछ constructive कर रहे हो with your days, you're not getting depressed, you're not sitting at home idle, not doing anything. C, you're meeting new people. तो कई बार ऐसा होता है हम लोगों से मिलते हैं तो भी हमें कितनी चीज़ें सीखने को मिलती है. यार कॉलेज से स्कूल से कॉलेज का सफ़र बहुत ही बड़ा स्विच होता है और स्कूल अगर कंप्लीट होने के बाद आप एक साल घर पे बैठे हो ना, इट कैन गेट अ लिटिल डिप्रेसिंग. तो इट्स ऑलवेज बेटर कि यू एनरोल इन लाइक अ डिप्लोमा कोर्स अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हो और अगर आप दोनों चीज़ें बैलेंस कर सकते हो या ये पार्ट टाइम डिप्लोमा है, इफ़ यू कैन मैनेज योर studies for NIFT, then enroll for a diploma course. So flexibility of timings देख लो, लेकिन I would suggest in the best constructive way possible use करो because ये diploma बाद में भी आपको help करेगा. My fifth tip for you guys would be watch a lot of documentary films, read a lot of books, magazines that are relevant to your course or your fashion education. The more knowledge and information you can consume in this 1 year, do it because colleges चालू हो जाएंगे उसके बाद तो as it is एक set routine हो जाएगा, वही subjects पढ़ने पड़ेंगे. तुम enjoy करने के लिए नहीं पढ़ोगे. There will be a point where you will be so saturated because it will be a task that you're doing it. Today you have the luxury to do it because you enjoy doing it. So I would personally suggest जितना हो सके books पढ़ो, जितना हो सके documentaries देखो, जितना हो सके crafts explore करो, go to different cities. अगर parents के साथ बाहर जा रहे हो, अगर अपने नानी घर जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, एक habit बना लो कि आपको वहाँ उस जगह का क्राफ्ट एक्सप्लोर करना है, आपको वहाँ क्या यूनिक है वो ढूंढना है. My sixth and last tip to you guys would be get a scrapbook and start pasting pictures and images of all fashion related articles that you find in the newspapers and magazines. कोई भी स्टाइल तुम्हें पसंद आता है, कोई भी how do I say it, आर्टिकल तुम्हें अच्छा लगता है, किसी ने अगर कोई कपड़े पहने हैं, कोई कलर, ज़रूरी नहीं है वो एकदम फैशन रिलेटेड ही हो. अगर आपको कोई प्रिंट अच्छा लग जाता है किसी न्यूज़पेपर में या किसी मैगजीन में, जस्ट make that scrapbook, work on it. This will become later on in life your inspiration book जहाँ तुम खोल खोल के चीज़ें देखोगे for inspiration. Maybe it will come in handy later on in life and there's no harm in being creative and crafty because again when you're working on a scrapbook तुम्हें later on in college learning diaries बनानी ही है. If you haven't seen my learning diary video, please click on the card above and it will take you right there. I've recently come to know from you guys that apparently आपके colleges में NIFT में learning diaries बनानी कैसे है उसके लिए you're being suggested my videos. So hey, if there's a teacher watching this video, thank you so much for suggesting and recommending me to your students. It means a lot. Anyway, these are all the 6 tips that I had for you guys. This is a very chilled out video. मैंने सोचा यार बहुत सारे बच्चे हैं जो depressed है, इतने comments आ रहे हैं, इतने messages आ रहे हैं, and I don't want you to be depressed. Make the most of this time, be productive, and I'm gonna see you guys next time.